স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্যৰ দাবীত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত কানচাছ ডিকমকে ধৰি 8 সংগঠনৰ ধৰ্ণা। কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওকে ধৰি 3 পাৰ্বত্য জিলাক সাঙুৰি সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 244 ক ৰূপায়ণৰ বাবে জিলাখনৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আন্দোলন কৰি আহিছে। সোমবাৰে কাৰ্বি আংলং আৰু উত্তৰ কাছাৰ জিলা ষ্টেট ডিমাণ্ড কমিটি চমুকৈ কানচাছ ডিকমকে ধৰি 8টাকৈ সংগঠনে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কানচাছ ডিকমৰ সভাপতি অজিত টিমুঙৰ নেতৃত্বত 8টাকৈ সংগঠনৰ 3 শতাধিক সদস্যই স্বায়ত্ত ৰাজ্যৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি নো ষ্টেট নো ৰেষ্ট আমাৰ দাবী পূৰণ কৰক আদি ধ্বনিৰে যন্তৰ মন্তৰৰ আকাশ বতাহ উত্তাল কৰি তোলে। কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি থাংচিং টিমুঙে কয় যে কংগ্ৰেছ বিজেপিকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সংবিধান প্ৰদত্ত দাবী 244 ক ৰূপায়ণৰ নামত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজক প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে। আনহাতে ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ DSUৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰমিত সংয়ুঙে সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি কয় যে সংবিধানৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকিয়ে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজে স্বায়ত্ত ৰাজ্যৰ দাবী আন্দোলন চলাই আহিছে। লগতে সংসদত স্বায়ত্ত ৰাজ্য প্ৰধান সন্দৰ্ভত বিল উত্থাপন কৰাৰ বাবে দাবী জনায়। উল্লেখ্য যে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে 2 পাৰ্বত্য জিলাৰ সাংসদ হৰেণ সিং বেৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত সাংসদ হৰেণ সিং বেয়ে কয় যে সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 244 ক 2 পাহাৰীয়া জিলাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ ইয়াক ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে নিশ্চয় উদ্যোগ ল'ব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। অহা সংসদৰ অধিৱেশনত 244 को रूपायणक লৈ बिल उत्थापन करा होगा। आज हम लोग यहाँ 8 अगस्त को हम लोग यहाँ कार्बी आंगलों और डिमा हासाओ से धरना करने के लिए आए हैं और ये धरना हम लोग इसीलिए करें क्योंकि पिछले 34 सालों से 37 ईयर्स से जो ऑटोनोमस स्टेट के लिए मूवमेंट लगातार करके आए हैं और हर साल हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे 3 बार मानसून सीजन पे एक बार और विंटर सीजन पे एक बार और बीच में एक बार आके हम लोग 3 बार या 2 बार आके हम लोग लगातार इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं। इस आंदोलन किस लिए हो रहा है? ये ऑटोनोमस स्टेट क्या है? तो ऑटोनोमस जो आर्टिकल 244A जो है ये 1969 में जब मेघालय का गठन हुआ था तो नॉर्थ असम मेघालय रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसको इंसर्ट किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। तो ये मांग जो है ये हम लोग संविधान के खिलाफ नहीं है, संविधानिक ये मांग है, संविधानिक ये आंदोलन है और ये लगातार हम लोग संवैधानिक अधिकार जो है हम लोग मांगना पड़ रहा है और इसका जो मांग है इसको जितना महत्वपूर्णता जितना इम्पोर्टेंस मिलना है ये अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग बार बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हम लोग का जो मांग है ऑटोनोमस स्टेट का इसका जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट बिल लाया जाए पार्लियामेंट में और इसको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए और जो अधूरा सपना है जो 34 सालों से 37 ईयर से जो डिमा हासाओ और कार्बी आंगलों का जनता जो देख रहा है सपना वो फुलफिल करे और हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट दिया जाए। आसलते এইটো যে আজি ধাৰণা দিলে ইয়াত আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজে এটা সজাতি দলে ইয়াত আহি ধাৰণাত আজি বহিছে আৰু এটা বিশেষ এটা উদ্দেশ্য লয়। সেই উদ্দেশ্যটো হ'ল ভাৰতীয় সংবিধানত যিটো অনুচ্ছেদ আছে 244A আৰু এই অধীনত অসমত এখন অট'নমাছ স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য গঠন কৰাক লৈ গতিকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজৰ এইটো সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু এই সাংবিধানিক অধিকাৰটো এই প্ৰাপ্যটো সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে যি দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলন কৰি আহিছে মই কওঁ যে ভাৰত চৰকাৰে নিশ্চয় এই বিষয়ত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব আৰু মই আশা কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতৰ দিনতে বহুতো উল্লেখনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা আমি দেখিছোঁ। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰ্টিকল 370 যিটো সংবিধানত এই আৰ্টিকল 370 থকাৰ কাৰণে এটা জম্মু কাশ্মীৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এটা যে ৰাজনৈতিকভাৱে যিটো সংঘাত হৈ আছে এই সংঘাত দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰ্টিকল 370 সংবিধানৰ পৰা এইটো স্ক্ৰেপ কৰা হৈছে। গতিকে ইমান এটা ডাঙৰ ইছ্যু ধৰক গোটেই বিশ্বতে
ধৰি লওক ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দেখিছোঁ আৰ্টিকল 370 স্ক্ৰেপ কৰাৰ লগে লগে গতিকে সেই কামটো যদি আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যদি কৰিব পাৰে তেনেহ'লে এইটো আমাৰ সংবিধানত থকাৰ এটা অনুচ্ছেদহে এইটো জাষ্ট ইমপ্লিমেণ্টহে কৰিব লাগে ক্ৰিয়েটো কৰিব নালাগে নতুন আকৌ সংবিধানত ভৰাই দিব লাগে সেইটো নহয় সংবিধানত থকা বস্তুটো এইটো ৰূপায়ণহে কৰিব লাগে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনতে আমাৰ এই যিটো দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীটো পূৰণ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই সমূহ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ সংগ্ৰামটো আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আকৌ আগুৱাই লৈ যাব লাগিব সংসদত এই 244 এ সন্দৰ্ভত এটা বিল উত্থাপন কৰিব দাবী কৰিছে আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ত মই ইতিমধ্যে মোৰ ভাষণত মই কৈছোঁ যে কাছডিকমৰ নেতৃত্ব আৰু আমাৰ টিম কাৰ্বি আংলং আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ তৰুণ আমি অহাবাৰ সেশন হোৱাৰ আগতে আমি এটা বিশেষ এটা जंतर मंतर में कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है दिल्ली जंतर मंतर में डिमा हासाओ और कार्बी आंगलोंग से हर साल प्रदर्शन होते हैं क्योंकि ये प्रदर्शन आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है और ये आर्टिकल 244A इंडियन की संविधान के अंदर में ही इंसर्ट किया गया है ये डिमा हासाओ और कार्बी आंगलोंग के लोगों का एक संवैधानिक डिमांड है मगर संवैधानिक डिमांड होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया इसलिए 40 सालों से कई बार हम लोग प्रदर्शन किया गया है कई सेक्रीफाइस किया गया है मगर आज तक सरकार ने ये नहीं बोला है कि कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ को आर्टिकल 244A इम्प्लीमेंट करेगा ये नहीं बोला है बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो उन लोगों का कई पॉलिटिकल प्रॉमिस दिया गया है कांग्रेस पार्टी के समय भी डिमा हासाओ और कार्बी आंगलोंग को लोगों को प्रॉमिस दिया गया है कि आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करेगा अभी जो मौजूदा सरकार है बीजेपी उन लोगों को नेता भी बोला गया है कि आर्टिकल 244A को भी इम्प्लीमेंट करेगा मगर वेयर इज द प्रॉमिस कहाँ है जो सरकार ने प्रॉमिस दिया है कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ के लोगों को वो प्रॉमिस कहाँ है इसलिए 40 साल हो या 50 साल हो ये आंदोलन हम लोग जारी रखेगा अगर केंद्र सरकार ने आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट नहीं करने से आज यहाँ पे कंचासदिकोम डिमा हासाओ स्टूडेंट यूनियन गारो यूनियन गोरखा स्टूडेंट यूनियन कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन कारसा और कई संगठन यहाँ पे मौजूद हुआ है हम लोग यहाँ पे करीबन 300 प्रदर्शनी डिफू से यहाँ पे आया है तो 300 प्रदर्शनी आज 2 बजे तक ये प्रदर्शन जारी रखेगा प्रेशराइज तो करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो प्रेशराइज करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनना है क्योंकि जो मौजूदा सरकार जो बीजेपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर की लोगों ने ही बोला हुआ है कि आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करेगा जब बीजेपी सरकार दिल्ली में आ जाए तो दिल्ली में तो बीजेपी सरकार है तो व्हाई नॉट दे आर इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 244 दिस इज द बिग क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू द गवर्नमेंट নতুন দিল্লীৰ পৰা দীপৰ অজিত ঋষি ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ লিভাৰত চৰ্বি পাইলছ ভোক নলগা পেটৰ বিষ বুকুৰ জ্বলাপোৰা টেঙা উগাৰ পেটত বুট শব্দ কৰা পেট ফুলা বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়াং আগৰৱাল গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ আগতীয়াকৈ নাম ভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ BK ৰোড মুছলিমপট্টি বৰপেটা যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 और 9706532197